Okay. Hope you guys have been revising your core and the notes and doing questions. So we have shared a few questions with you. We have done questions in class as well as shared questions for the home. Additionally, we also have end of chapter quizzes, which will be provided to you by the SSCI team. And I have also prepared a set of 30 questions from LM1. They are practice questions. They cover all the portions of LM1. And hopefully, practicing that will give you a thorough revision of the chapter. So, we will also be sharing those 30 questions with you after the class today. I wanted to show those questions first in the class, take you quickly through it, and then we will share it to you to do it as homework, and we'll discuss it in the next class. That should be a good revision for your LM1. Make sure you're reading the material that you have, you're reading your notes, and also for additional practice, solving all the curriculum questions, end of chapter questions. So make sure you are doing that to be very thorough with the chapter. We took a few extra, like it took us extra time to get through LM1, but I wanted to make sure that these building blocks were all set, the concepts were all clear, we weren't rushing through the concepts. So hopefully all the concepts are clear to everybody, but ensure you practice as much as you can because that is only going to strengthen your base. Also, when you're practicing the questions, please make sure that you are using the calculator. We haven't done a lot of calculator, but we still have done some bit of it. No, Alishba, there's no harmonic mean this time. So for the revised 2027 curriculum, there is only geometric mean and arithmetic mean. There is no harmonic mean. Since the usage of harmonic mean is very limited and not really practically applicable, we haven't done harmonic mean because the revised QM syllabus does not have that. Okay, as I was saying, ensure that you guys are using calculators while practicing the sum. I have mentioned this in the class previously as well that we haven't done the entire calculator thing till now, but we have used the calculator wherever we can. We have seen the I conversion feature where we are converting nominal interest rates into effective periodic interest rates and effective annual interest rates. We have also used the TVM slightly. So wherever you can, please use the calculator. And we will, of course, do more of it as we progress. But you should be comfortable enough with the calculator. Okay. So hope once again, the audio and visual, everything is okay for everybody. There's no issue on my end. And we can start with the class. So as I have been telling you, we have finished learning module 1. In learning module 1, what we essentially did was return. We learned how to calculate a basic single period holding return, which means the return that we get when we hold our investment or hold the instrument. And from that, we also know how to calculate multiple period holding returns. So if we have multiple single period holding returns, we should be able to calculate that return across the entire period. From that, we moved on to understanding what was the aggregations. So arithmetic mean returns and geometric mean returns. Say if we have a longer investment period with different returns, and I want to use one aggregating factor. So that is where our mean returns come into the picture. We did arithmetic mean return, but we understood the drawbacks of AMR. It did not take into account compounding. And the main assumption stays that the initial investment value stays the same. It does not change. That is the assumption behind calculating AMR. GMR, on the other hand, takes into account the compounding effect of returns. It assumes that returns every period is changing and is compounding.
And based on that compounding factor, we calculate the geometric mean return. We also saw the relation between the two of them. GMR is always going to be less than EMR, and more the volatility, more the variability between the returns, more the GMR will be less than AMR. The difference between them will increase. Post that, we moved on to the concept of if there are different investments and we need to compare those investments, the best way is to annualize the returns. That is, get them to a year factor. So get all of those returns that may be across multiple holding periods or maybe across different holding periods, get all of them to an annual figure, annualize them. It just makes comparing investments easier. लेकिन एनुअलाइजिंग का जो एक इम्प्लिसिट अजम्पशन ये था कि हर पीरियड में जो रिटर्न है वो हमारा कांस्टेंट है. देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क. वी आर बीइंग एबल टू री इन्वेस्ट every period using the same interest rate. So that was an implicit assumption behind annualization, but we had to annualize it. Moving from annualization, we got into play nominal returns and effective returns. Nominal returns are the stated returns. स्टेट किया गया है लेकिन एक्चुअली जो रिटर्न मिल रहा है वो कोई अलग पीरियड में मिल रहा है. सो आई कुड हैव अ रिटर्न व्हिच इज 12% पर एनम compounded monthly. So this becomes the nominal return. Here the 12% per annum is stating that we are paying 12% on an annual basis, but the actual compounding is happening every month. So the effective monthly return becomes 1% per month. And then how can we get the effective annual rate from this effective 1% monthly rate? So उसके बाद हमने किया nominal और effective. Nominal के effective periodic और फिर effective annual calculate करना. Then the topic we touched upon was the required return. So based on the risk we take in an investment and the risk that is already there, that is the default and the reinvestment and inflation. So ये तो हमको चाहिए ही. The risk free rate is what we require. उसके ऊपर based on the additional return, the additional risk factors we take, because if the kind of security we are investing in, that is अगर corporate bond है तो default का additional risk है, long term bond है तो हम maturity risk से deal कर रहे हैं. So based on the additional risk factors that we take, we demand additional risk premium, and that is how we calculate what is our required rate of return. That is, what is that minimum return we require in order to postpone our consumption, in order to delay consumption and save or invest. What is the minimum return we require? After this, we moved on to some of the return, some of the ways in which we calculate return that is specific to an investor. तो एक सिक्योरिटी का एक पर्टिकुलर रिटर्न हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिलता है ये सिक्योरिटी रिटर्न से स्लाइटली डिफर कर सकता है. एक तरीका है जिससे वो डिफर करता है, दैट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड. सो वी स्पोक अबाउट ग्रॉस रिटर्न एंड नेट रिटर्न. ग्रॉस में जो डायरेक्ट कॉस्ट है इन्वेस्टिंग का वो हम कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी रिटर्न is reduced by the amount of direct cost that is incurred. And then there are indirect costs as well. For example, if a manager is managing a fund, he will take his commission. So there's going to be management fee and performance fee. These are the indirect costs. जब हम इसको भी रिटर्न से और कम कर देते हैं, that is what the investor gets. So investor के लिए जरूरी है कि वो net return consider करे, जिसमें से दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हटाया हुआ है. और मैनेजर के लिए जरूरी है कि मैनेजर परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाए ग्रॉस रिटर्न के बेसिस पे, बिकॉज द डायरेक्ट कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड बाय द मैनेजर्स. सो वन वाज ग्रॉस एंड नेट रिटर्न्स. The other we spoke about was after tax returns. So after tax net returns are what the investor actually gets. The investor has to pay tax on
कैपिटल रिटर्न्स और द प्राइस रिटर्न एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न। तो अलग अलग तरीके के टैक्स रेजीम्स हो सकते हैं, अलग तरीके का टैक्स अकाउंट हो सकता है, हर इंडिविजुअल के लिए मार्जिनल टैक्स रेट डिफर कर सकता है, एंड द टाइम होराइजन कैन डिफाइन योर टैक्स। Based on these factors, we will have certain tax rates. Based on that tax rates, what the investor actually gets is the return after considering the tax component. And lastly, we spoke about leveraged returns. So what if investor पूरा अपना पैसा नहीं लगा रहा है, investor पैसा लगा रहा है by borrowing some funds. That fund is borrowed at a constant rate, right? That is the rate of debt or the interest rate we are paying on the borrowed funds. And we spoke about leverage कैसे हमारा risk और return दोनों को magnify करता है. So if we have taken leverage and if we are getting a positive return, then for a leveraged person, that return is going to be more than the portfolio return. So if your portfolio earns 12%, for example, and you have taken a leveraged position, that means you have taken some amount of debt to do this investment, then you are going to, as a leverage return, you are going to get more than 12%. But this is only till the time the cost of borrowing is less than your portfolio return. So till the time हमने borrow करने पे हमको जितना पैसा देना पड़ रहा है as interest, जब तक वो कम है हमारे overall return से, तब तक my returns are going to be more. But the moment my cost of borrowing increases, my returns are going to be even less. And if my portfolio is earning negative returns, so मैं as a leverage investor, I'm going to earn even less. So that is what we say when we mean by leverage magnifies both return and risk. Positive side को भी amplify करता है और negative side को भी amplify करता है. So these were the topics we touched upon in learning module 1. We mainly spoke about returns. Why returns is important? क्योंकि ये आपका सबसे essential building block है. Ultimately जब हम invest करते हैं, जब हम invest करना शुरू करते हैं या हम अपना result देखना चाहते हैं, what we essentially want to know is how much return have I earned? मैंने जो अपना consumption defer करके investment किया, वो इन्वेस्टमेंट का मेरे को क्या फल मिला? Have I got the required rate of return? Have I got the desired return? क्या टैक्स देने के बाद भी मेरा रिटर्न उतना बच रहा है? क्या इन्फ्लेशन इतना तो नहीं कि मेरा रियल रिटर्न ही खा जा रहा है? So even though, say on the face of it, I am earning a 6% return, but inflation is 7%, so my real return is actually nothing, it's negative. Which means मेरा देखने में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि रियल टर्म्स में माय रिटर्न इज नेगेटिव. So that is why it's important to understand the concept of return. Now the second learning module is essentially an extension of the first learning module. We need to understand return, but we also need to understand how the components of return differ for different securities. तो जो जितने भी सिक्योरिटी हैं, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स और कैश फॉर दैट मैटर, इनका रिटर्न कैसे प्लेस्ड है, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर सिक्योरिटी का क्या रिटर्न कंपोनेंट है, because this understanding essentially is going to help you build a proper portfolio for any investor. Consider you are an investor, okay? You are a wealth investor. इसका मतलब आप individuals का पैसा manage करते हो. You are a wealth manager, individual wealth manager. You are sitting in your office. एक यंग सा लड़का आता है आपके पास और कहता है कि मैंने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया है, आई हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड न्यू जॉब, इट्स अ वेरी गुड वेल पेइंग जॉब, एंड आई कैन वेरी कंफर्टेबली आफ्टर माई कंजम्पशन इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट इन अ वे कि मेरा वेल्थ मल्टीप्लाई हो, लेकिन
I am ready to take risk. I know that I'm going to earn. I have started earning. I'm going to earn for a very long period. I want to comfortably invest in a way कि मेरा ग्रोथ ज्यादा हो, मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है, मेरे को फिलहाल अगले 20 साल तक मेरे को रिटर्न जनरेट नहीं करना, मतलब मेरे को रेगुलर सोर्स ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे को सैलरी से आ जाएगा. सो प्लीज मेक अ पोर्टफोलियो फॉर मी. The portfolio that we build for this individual is going to be slightly riskier, is going to have equities, is going to have small cap equity. We can also make use of different alternate investments. हम currency में लगा सकते हैं, हम derivatives में लगा सकते हैं, हम real estate में भी लगा सकते हैं क्योंकि हमको पता है हमारे पास एक लंबा horizon है investment का. We can of course invest a small amount in fixed income also to have some sort of security. लेकिन बहुत ज़्यादा fixed income की हमको ज़रूरत नहीं है because we don't need regular coupon payments. We don't need a regular stream of income. So we make a portfolio for this individual. Sometime later, another individual walks into our office. He says, I'm 55 years old. Today is when I have retired. आज से मेरी रेगुलर सैलरी आना बंद होगी, लेकिन मैंने इतने साल काम करके बहुत सेविंग्स कर लिया है. अब मेरे को इसको इन्वेस्ट करना है इन अ वे कि अगले 15 साल तक, आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम गोइंग टू लिव फॉर द नेक्स्ट 15 years, अगले 15 साल तक मेरे को एक रेगुलर इनकम, एक मंथली इनकम जनरेट होते रहे. मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. आई डोंट वांट अननेसेसरी रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इनटू फंड्स दैट आर ग्रोथ स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ से मतलब नहीं है. मेरे को रेगुलर रिटर्न से मतलब है. आई वांट टू हैव अ स्टेडी लाइफस्टाइल फॉर विच आई वांट अ स्टेडी इनकम सोर्स फॉर द नेक्स्ट 15 years. I don't want to take a lot of risk. Can we sell him the same portfolio we built for that 23-year-old man who had just started his job? No, we can't. क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स अलग थे, उसका इन्वेस्टमेंट थ्योरी अलग था, उसका रैशनल अलग था, उसका पर्पस अलग था, और इनका पर्पस अलग है. इनको ग्रोथ नहीं चाहिए, इनको प्राइस रिटर्न नहीं चाहिए, इनको डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न चाहिए. इनको चाहिए कि इनके इन्वेस्टमेंट से मंथली रिटर्न जनरेट हो सके. सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज that do not focus so much on price return but focus on distribution return. So we would essentially invest a very huge part of his portfolio in fixed income securities, and we wouldn't go into very risky assets जिसका long horizon में हमको growth देखने मिले. We do not have a very long horizon. So what I'm trying to say is, हमारे पास as professionals we have a lot of tools in our arsenal. हमारे पास बॉन्ड है, हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास कैश है, हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, we have commodities, currencies, all of these things we have in our arsenal, right? This is our toolbox. लेकिन हम हर किसी को हर टाइप ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं दे सकते. The portfolio cannot be uniform. The portfolio cannot be consistent for every individual. हम किसको कैसा पोर्टफोलियो बना के देते हैं, हम कौन सा टूल्स यूज करते हैं, दैट हैज टू बी टेलर्ड. सो फॉर दैट वी विल हैव टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन सी सिक्योरिटी किस टाइप का रिटर्न जनरेट करती है, हम कौन से सिचुएशन में कैसा सिक्योरिटी दे सकते हैं किसी को, हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या सिक्योरिटी हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए. दैट will depend upon कि उस सिक्योरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. So the total return we have been talking about, we know that there are two components. There is a price return, the return that comes from essentially the change in price, and then there is distribution return, जो intermediate distributions आते हैं, जैसे फिक्स इनकम या बॉन्ड के टर्म्स में जो कूपन पेमेंट आते हैं, या इक्विटी के रिलेशन में जो हमको डिविडेंड मिलता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न. सो वी नो दैट टोटल रिटर्न इज डीकम्पोज्ड इनटू दीज टू.
This we have understood from LM1. LM2 में we will understand कि ये दोनों का प्राइस रिटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न का प्रपोर्शन कैसे डिफर करता है फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज. So what is the characteristics of every security in terms of distribution return and price return? ये समझना इसीलिए जरूरी है ताकि हम बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकें, ताकि हमको ये समझ आ सके कि कौन से सिचुएशन में कैसा टूल निकालना है, कौन से सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करना है. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझेंगे सिक्योरिटीज का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, फाइनेंशियल एसेट्स का, तो हमको ये नहीं पता होगा कि किस इंसान को कैसा टूल उस समय प्रोवाइड करना है, which tool, which instrument is suited for which individual. We will not know how to effectively make our portfolios if we do not understand the characteristics of our tools. I hope the context of what we are going to do right now is clear. Learning module 2 is very simple, is very intuitive. The concept is an extension of LM1. We are here also talking about returns. लेकिन क्यों हम रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं या क्यों हम प्रपोर्शन समझना चाह रहे हैं? I hope that is clear. Please confirm if what I have explained right now is clear. Please confirm if this makes sense, that we have to understand the proportion of the different returns for different securities. And it's one of the easiest chapters. It's going to be very intuitive. And in fact, we are going to do this chapter बहुत ज़्यादा interactive way में, because जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब आप लोग को intuitively समझ आएगा. So you are going to answer, I am going to ask questions. Okay? So I hope all of you are ready for that. Okay. So to start with this chapter, the first part, they are telling us कि returns के दो component होते हैं main, जैसा हम बात कर चुके हैं. एक price return that we know is from price appreciation or the change in price, and the second is distribution return. But here distribution return को भी उन्होंने थोड़ा सा और dissect किया है. They are saying that there is a fixed distribution return and there is a variable distribution return. So please respond everybody. Equity में प्राइस रिटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न में ज्यादा प्रपोर्शन किसका है? इक्विटी में प्राइस रिटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न में ज्यादा प्रपोर्शन किसका है? ओके, प्रेरणा सेज प्राइस, अलिशबा सेज प्राइस, प्राजल सेज प्राइस रिटर्न. ओके, आराध्या प्राइस, दैट इज करेक्ट. ऑल ऑफ यू, इक्विटी में एसेंशियली प्राइस रिटर्न है. इसका क्या मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न है ही नहीं इक्विटी में? Does that mean that equity does not have distribution return? Yes or no? No. Okay, Prajal says no. It has. Absolutely, it has. And from the dissection, please confirm कि equity में जो distribution return है वो fixed distribution return है या variable distribution return है? Yes, Karan, we do have it in form of dividend. That is correct. All of you have answered correctly. But now confirm कि जो distribution return है वो fixed है या variable है? Correct. I'm getting a few answers. Rituraj says variable. Yes, all of you are saying variable, which is correct. It is variable because कितना dividend मिलेगा हमको नहीं पता, right? And secondly, मिलेगा या नहीं ये भी कंपनी के बोर्ड पे डिपेंडेंट है. So we are not sure whether we are going to get any dividends, and if we do, then it's not a fixed amount. We do not know how much dividend you are going to get. So it's a variable distribution return component. Perfect. Now let's come to bond. Again, answer the same question. Bond में price return ज्यादा है या distribution return ज्यादा है?
Please answer. Bonds में प्राइस रिटर्न ज्यादा है या डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न ज्यादा है? Yes, that is correct. Prerna, Alishba, Vasu. We have distribution return क्योंकि component we have more for distribution return क्योंकि हमारा एक कूपन पेमेंट है जो हमको पता है रेगुलरली मिलने वाला है. And is that fixed distribution return or variable distribution return? Is that fixed distribution return or variable distribution return? Correct. In most of the cases, it's going to be fixed until and unless there are securities such as floating bonds, जहाँ पे कूपन चेंज होता रहता है, और an inflation indexed bond, जहाँ पे your coupon payment is related to the inflation, because of which the percentage of coupon might vary. Unless and until we have such specific bonds, it is mostly fixed distribution income. Again, we can have a third type of security, which is a combination of the two, the hybrid securities. For hybrid security, the example is one, the floating rate bonds that I spoke of, the inflation index bonds that I spoke of. In terms of equity, we can have preferred share. So I hope all of you are aware that we have ordinary shares and we have preferred shares. Preferred share में dividend जो होता है वो generally is mentioned as coupons are mentioned for fixed income. So preferred share में आपका जो dividend है वो fixed होता है, which means that the company will pay you a dividend and it's a fixed amount, and in case the company does not pay the dividend in any one period, then in the case of cumulative dividends, cumulative preference shares, आपका वो dividend accumulate होता जाता है. So it's a hybrid security. Even though it's equity, its main component comes from your distribution return. So we have bonds, जिसका हम characteristics आप सबने मुझे बताया है कि it mainly comes from distribution return, वो भी fixed distribution return. Price return का scope उसमें कम है क्योंकि price changes कम होते हैं. And then we have equity. Equity is mainly from price return. अगर distribution है तो भी वो variable distribution return है. And then we have hybrid, जिसमें it's a mix of the two. Right? So we have price return and distribution return. It depends on what kind of security it is. Now, this was financial returns for financial assets, right? ये सारे equity, bond, ये सारे assets थे. तो financial asset का हमने समझा return का proportion, right? We understood the return proportion for financial asset. The second thing we had studied about was financial instruments. So if you all remember, we had studied financial assets, financial instruments, and financial indicator in the first learning module. Financial assets were anything that has value. Financial instruments were agreements, standardized contractual tradable agreements, basically used to derive value from the financial assets. And then we had financial indicators, which were benchmarks, जिसका अपना कोई cash flow नहीं होता, जिसको हम directly trade नहीं कर सकते, but there are other instruments through which we can trade in financial indicators. So right now we have spoken about the return component, कि वो कैसे financial assets में distributed है. Next we'll come to ये return component financial instruments में कैसे distributed है. So one, we have financial instruments. They are the same as the assets we spoke about, equity, bond. So you already know कि equity bond का क्या structure होगा return के terms पे. But then there are also another set of financial instruments which are derivatives, right? So derivatives are such contracts that derives its value from an underlying asset. Derivatives are instruments that derives its value from an underlying financial asset. Let me divert a bit.
let me explain a little more of derivatives, but using a non-financial example. Suppose some India series is going to start. Suppose India England series is going to start. I know it happened, but let's say there's going to be an India England series. I know there are going to be 10 matches, and I want to place a bet and say that in the first match, India is going to make above 250 runs. Okay, so I want to place a bet and I say India is going to make above 250 runs. So I have a contract that will derive, I am placing a bet that will derive its value from the India runs, from the runs India makes in that matches. And I say 250 के ऊपर जितना भी बनाया, हर additional run का I will take 10 rupees. और अगर 250 से कम बनाया तो हर additional run का I will pay 10 rupees. ठीक है, तो वो डेरिवेटिव का एट द एंड मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है? अगर इंडिया सपोज 260 बनाया विच इज 10 runs more than 250, then what is the profit that I will earn? I said I'm going to make 10 rupees on every additional run India makes over 250. Correct? Can I have some more answers, please? 100. Correct. So, अगर इंडिया 260 बनाता है, मेरा प्रॉफिट इज 100. 10 runs एडिशनल, हर रन का 10, सो 10 into 10, 100. अगर इंडिया 200 बनाता है तो मैंने क्या लूज किया? इफ इंडिया मेक्स 200, हाउ मच मनी डिड आई लूज? 500. दैट इज करेक्ट. तो ये डेरिवेटिव का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. ये वैल्यू डिराइव कर रहे हैं हम इंडिया के मैचेस से, इंडिया के रन से, और एसेंशियली इंडिया का रन जैसा होगा, इंडिया का परफॉर्मेंस जैसा होगा, उस पे मेरा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा. सो दे आर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर मेड ऑन अनदर फाइनेंशियल एसेट. उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम अनदर फाइनेंशियल एसेट जिसके ऊपर वो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. आई होप दैट इज क्लियर. तो डेरिवेटिव्स में एसेंशियली वी हैव प्राइस रिटर्न. डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड कर रहा है. तो डेरिवेटिव्स आर एसेंशियली प्राइस रिटर्न. Is that clear? Is the concept of derivatives clear to everybody? I'm sure many of you would have started derivatives, तो ये आपको पहले से पता ही होगा कि derivatives क्या होता है. But I hope that is clear. Okay. Okay, great. So we have spoken about the return components when we look at financial asset. We have spoken about the return components when we look at financial instruments. We turn to financial indicators. Since financial indicators do not generate a cash flow, तो हर financial indicator के लिए हम नहीं बता सकते कि क्या price return होगा, क्या distribution return होगा. We cannot state for indicators कि क्या प्राइस रिटर्न और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न होगा, क्योंकि इनका खुद का कोई कैश फ्लो नहीं होता. बट डिपेंडिंग अपॉन विच इंडिकेटर वी आर लुकिंग एट, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट generates its value from the indicators, and based on that instrument we can talk about price return and distribution return. So interest rates. इंटरेस्ट रेट्स और इंडिकेटर्स. हम इंटरेस्ट रेट्स में डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन हम एक गवर्नमेंट बॉन्ड, हम एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे को क्या देता है? मेरे को रिस्क फ्री रेट देता है, मेरे को रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट देता है. तो अगर मेरे को रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट चाहिए, इफ द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज व्हाट आई वांट टू अर्न, देन आई कैन इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड. Short-term government bond is exactly going to give me the risk-free interest rate because that is what it mirrors. Yes or no?
Please confirm if that is okay. अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट चाहिए, इंटरेस्ट रेट में मैं डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकती. I can't go to the RBI and say, okay, I want to get this interest rate. I can't do that. But I can buy the short-term government bond that is going to mirror the interest rate and give me the interest rate. So, correct, Vasu, we can go for a T-bill. T-bill is exactly what I'm talking about, a short-term government bond or a government bond based on what kind of interest rate you want. अगर आपको real risk free चाहिए या inflation के साथ चाहिए, so we can go for tips. So based on what kind of interest rate we are essentially wanting to extract. Similarly, there are foreign exchange rates which you cannot directly trade in. आप जाके US और रुपी का foreign exchange नहीं ले सकते, लेकिन आप foreign investments कर सकते हो ताकि जब वो foreign में return generate हो और आप उसको अपने home country में convert करें, तो आप फॉरेन कंपनी का रिटर्न के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर भी ले लें. दैट इज वन वे, राइट? आई होप दैट इज क्लियर. इफ आई एम एन इंडियन इन्वेस्टर, आई वांट टू इन्वेस्ट इन द यूएस, आई कैन convert my rupee into dollars first, invest in the US company. The US company generates a return in dollar, which I will again convert into rupee. तो जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है उसमें वो कंपनी का रिटर्न फैक्टर तो है, लेकिन करेंसी एक्सपोजर भी है दैट आई एम गोइंग टू गेट पार्ट ऑफ एज पार्ट ऑफ माय रिटर्न, राइट? सो दैट इज वन वे टू गेट फॉरेन exchange rate. Or else there are derivatives, there are forward contracts, there are options that are based on these foreign exchange rates that we can invest in. And based on that we can determine कि हमारा return का जो component है वो कैसे distributed होगा. Okay, so we spoke about again return component for financial assets, which were equity, bond, and hybrids. We spoke about return component in financial instruments, जिसमें से एक तो हमारा financial instrument ही था. The same we spoke about in financial assets, and second were derivatives. Then we spoke about financial indicators. Financial indicators का अपना कोई cash flow नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से जिन instruments के through हम financial indicators का value derive कर सकते हैं, उन indicators का उन instruments का अपना एक component होगा. Clear? That was the first part of your LM2. I haven't opened my notepad yet. We haven't written anything because ये बहुत, as I said, ये बहुत intuitive है in a way. बहुत ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. तो I hope nobody is uncomfortable with the fact that मैम आपने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, आपने distinguish करके लिख के नहीं बताया. और इसीलिए मैं बार बार repeat भी कर रही हूँ the topics that we are doing so that it's clear. Not just that, why we are studying this particular topic या इसका context क्या है वो भी आप लोग को clear होना चाहिए. If you can confirm if that is clear to all of you, I can move ahead. If you could confirm if all of this is clear, I can move ahead. Okay, great. Got a few thumbs up, got a yes. Cool. Now, the second part of it is very interesting actually. The core reading, उसने हमको बता दिया रिटर्न्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसने हमको बता दिया कि रिस्क कितना है, राइट? वी हैव ऑल्सो लर्न्ड इन आर LM1 कि अगर रिस्क ज्यादा होगा तो मैं रिटर्न ज्यादा डिमांड करूंगी. If you remember the required rate of return formula, we have a risk premium component, which means the more risk I take, the more risk premium I want for that risk, which means the more risk I take, the more required rate of return I want. So we have a risk return framework. More the risk, more the return. From there, what the CFA Institute is doing now, it is taking historical returns from 1979 to 2023. So essentially,
45 ईयर्स का वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स ले रहा है फॉर 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. वन इज अ लार्ज कैप स्टॉक्स का इंडेक्स. All of these are US companies. So there is a US large cap stock ka index. There is a US small cap stock ka index. There is US government bond and there is US corporate bond. So they have taken these 4 securities and they have taken the historical returns of these 4 securities across the last 45 years. और हिस्टोरिकली ये अभी तक इसने बस हमको बताया है कि कौन सा एसेट कैसा रिटर्न देता है, किससे हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो ये सबको डेटा के थ्रू बैकअप करना चाह रहा है. इट्स जस्ट गिविंग अस एविडेंस यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू शो कि रिटर्न्स सच में ऐसे ही जनरेट होते हैं. आई विल क्विकली शेयर माय स्क्रीन, show you the graph they have given. Show you the graph they have given, and from there we can move on. This is the graph that the core readings has. इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, there are 4 colored lines. ठीक है, ये ग्रीन वाला जो है ये रसल 1000 इंडेक्स है जो लार्ज कैप यूएस लार्ज कैप स्टॉक्स का इंडेक्स है. वन ओवर हियर इज द रसल 2000 इंडेक्स विच इज स्मॉल कैप स्टॉक्स. तो लार्ज कैप और जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है. एंड देन द रेड इज द कॉर्पोरेट टोटल रिटर्न. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिटर्न है. और पर्पल वाला जो सबसे लास्ट में है, दीज आर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. So these are the total returns for the 4 securities across 45 years. So they have taken data, I think, from 1979 to 2023. If you see the graph carefully, there are a few observations that we can make. पहला, अगर आपको दिख रहा है तो ये पीरियड तक till maybe like the early 1990s, if you can see, then till this early 1990s over here, आप देखोगे कि बहुत क्लोजली ये चारों सिक्योरिटी का रिटर्न जा रहा है. राइट, इट्स वेरी स्टेबल, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं है. प्लस बॉन्ड और इक्विटी सबका रिटर्न बहुत सेम है. इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी सेम अक्रॉस your 1979 to say 1990, 1991, right? From here, if you see, एक divergence start होता है 1991 के बाद से. अगर आप देखो, and 1991, if people remember, there was a crisis that happened. There were rules and regulations that were changed. So financial market में काफी ज्यादा developments आई थी. If you can see, तो 1991-2 के बाद से एसेंशियली ये डाइवर्ज करना शुरू हो रहा है. जो हमारे सिक्योरिटीज हैं वो एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं विथ अ स्लाइट वेरिएबिलिटी. तो अभी तक स्टेबल था काफी, लेकिन अब देखो ये ग्राफ ऊपर नीचे तो जा रहा है विच शोज वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स एंड देयर इज ऑल्सो अ डाइवर्जेंस. ये इस पॉइंट से सडनली इक्विटी ऊपर जाना शुरू कर चुकी है, जबकि बॉन्ड्स स्टेबल ही है relatively. Can you see that? Can all of you note that? कि इक्विटी ऊपर जाना शुरू कर चुकी है जबकि बॉन्ड्स काफी स्टेबल हैं. Now look at this particular portion. If you can follow the arrow, look at this particular portion. यहाँ पे we can see another phase. We see this 2008 का financial crisis. If any of you have an idea, if any of you know about the 2008 global crisis, the bubble that happened, you can see that equity bond की लाइन को कट करके नीचे जा चुकी है. तो ये पूरे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि equity बॉन्ड से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है.
तो दिस शोज कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है लोग रिस्की एसेट्स को छोड़कर सेफ एसेट्स में आ जाते हैं और risky asset के returns because they are riskier, right? So when a financial crisis happens, the returns tend to go down, but the bonds are still stable. So if you can see the 2008 financial crisis, the equity returns tanked below the bond returns, and then of course it came back. It bounced back eventually. वापस हमारा equity market ऊपर चला गया. पर यहाँ पे सिर्फ इक्विटी मार्केट ऊपर ही नहीं गया है, डाइवर्जेंस भी है. इफ यू कैन सी पोस्ट 2000 द स्मॉल कैप रिटर्न्स हैज ऑलवेज बीन हायर देन large cap returns, which means because small caps are riskier, right? I hope all of you have that understanding कि small cap securities are riskier than large cap securities, because of which the returns have constantly been higher than the large cap returns. Again, pointing at the fact कि अगर risk ज़्यादा होगा तो मेरा return भी ज़्यादा होगा. And bonds have been lower. Bond में भी आप pattern देख पाओगे कि corporate bond का returns have always been higher than your government bond का returns. So the corporate bonds, because riskier, demand more risk premium, demand more return, and that is why we can say that the corporate bonds have also generated higher returns than government bonds. Having said that, when we look at aggregated returns from historical data, so even though the total return for a corporate bond at any point is higher, जो total return है corporate bond का, that has historically proven to be less than government bonds because of default. तो क्योंकि corporate bonds default ज़्यादा करते हैं, the total return of a corporate bond over the period, not at any given point, over the period has tended to be lesser than government bonds क्योंकि government bonds default कम करते. Now this is something I wanted to show all of you. जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ही हमने essentially evidence के through भी देखा है, and the factor and the relation that we understand and the relation that we are understanding is जितना ज़्यादा risk उतना ज़्यादा return I will demand. ठीक है? Now we are speaking about risk, and we have specifically spoken about what risk is in LM1. Can somebody please tell me what the risk is? What do we mean by risk? In LM1 हमने specifically define किया था risk क्या होता है. Can somebody please tell me what do we mean by risk? Anybody? Uncertainty of returns. Vasu, yes, that we do not get the same return as expected. Absolutely. That is exactly what we mean by returns, uncertainty of returns. Default risk, Kalishba, is a type of risk, but risk का क्या मतलब है? Probability of loss भी is not what we mean by risk. Risk का मतलब होता है the uncertainty of return. Investment के पहले मेरे कुछ expectation है returns की, so I have an expected return and there is an actual return. So the difference between expected and actual, जितना मैंने expect किया है उतना मुझे मिलेगा नहीं, ये एक uncertainty है. जितना ज़्यादा ये uncertainty उतना ज़्यादा risk. So risk is essentially the uncertainty between ex ante and ex post return. Yes, absolutely, all of you are correct about it. Very good. So risk का मतलब uncertainty of returns. जो मैंने expect किया है उतना return अगर ना मिला तो वो uncertainty is risk. Now there are securities जहाँ पे risk ज्यादा होता है, जहाँ पे chances of the return diverging
from our expected returns is more, right? And then there are securities where the chances of this divergence is less. तो जहां पे ये डाइवर्जेंस का चांस ज्यादा है, जहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ना मिले, वहां पे रिस्क भी ज्यादा है. और जहां पे चांसेस है कि ये डाइवर्जेंस रिटर्न इट्स नॉट गोइंग टू मूव अ लॉट, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसी के आसपास मिलेगा, वहां पे रिस्क भी कम है. नाउ ओवर हियर वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिस्क, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क. एक है मैक्रो रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क. Macro risk is the risk that happens across the economy, across the global, जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनको डाइवर्सिफाई करना भी हमारे हाथ में नहीं है. What do I mean by diversification? Suppose I am investing in a foreign equity, right? I'm investing in a foreign market. फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इज द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, राइट? जैसे हमने बताया कि फॉरेन कंट्री का कुछ रिटर्न होगा, वो वापस फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर को कैप्चर करके होम कंट्री में रिटर्न देगा. ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक रिस्क क्या है कि फॉरेन करेंसी एक्सपोजर कहीं मेरे अगेंस्ट ना चला जाए, राइट? आई कैन बाय अ डेरिवेटिव जो ये फॉरेन करेंसी के एक्सपोजर को रिड्यूस कर देता है. अगर मेरे को 3 महीने बाद मेरा फॉरेन, आई थिंक आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ. So let's say today I invest in a foreign country investment. Okay, I am not getting in numbers and I know कि 3 महीने बाद मैं I bought the shares of company A and 3 महीने बाद I am going to sell the shares of A. When I sell the shares of A, तो जो इस समय का करेंसी स्पॉट रेट होगा, तो सपोज आई हैव इन्वेस्टेड इन डॉलर्स एंड आई एम एन इन्वेस्टर इन इंडिया. ठीक है, आई नो 3 महीने बाद जो भी रुपी डॉलर स्पॉट रेट होगा, 3 महीने बाद ये एक्सपोजर मेरे रिटर्न में आएगा. वॉट एवर रिटर्न आई जनरेट is going to have an exposure of the spot rate after 3 months. Now, to diversify, I do not want to take the chance कि मेरा return diverge करे. So, if I'm expecting a certain return, I know that it can diverge from the actual return because of this currency exposure. This divergence is risk. This risk is being caused by currency exposure. So I want to diversify this risk. What I can do is at time t0, I can enter into a forward contract. I can enter into a forward contract for currency after 3 months. Okay. So I can enter into a forward contract for the currency after 3 months. इसका मतलब मैं आज ही 3 महीने बाद का करेंसी रेट फिक्स कर रही हूं. I am fixing the rate at which I am going to sell dollar and buy rupee. Since मेरा जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा वो डॉलर में आएगा, which means after 3 months I'll have to sell dollar, buy rupees. I will have an exposure to risk अगर मैं इस पोजीशन को ओपन छोड़ देती हूँ. अगर मैं डाइवर्सिफाई नहीं करती हूँ तो मेरा रिटर्न विल डिपेंड अपॉन 3 महीने बाद क्या रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट है. I don't want to take that risk. I want to be sure of what I am getting.
I want to remove that uncertainty being caused by currency. तो उसकी जगह I can get into a forward contract जहां पे I am fixing the rate at which I will sell dollars by rupee. ये रेट फिक्स करने की वजह से जो 3 महीने बाद का स्पॉट रेट का अनसर्टेनिटी है, आई एम रिमूविंग दैट अनसर्टेनिटी. सो दिस इज अ रिस्क दैट आई कैन डाइवर्सिफाई. मैं एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट खरीदने से ये रिस्क डाइवर्सिफाई कर पा रही हूँ, रिड्यूस कर पा रही हूँ. आई कैन गेट सम अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी इनटू माय एक्सपोजर. That is called diversifying risk. So when there are risks that are macro in nature, that is affecting all the securities, it is not in your control and it is not diversifiable in any way. It's called systematic risk. We cannot diversify that. We cannot diversify this risk. But so some example of these are inflation. इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जो सारे सिक्योरिटीज को अफेक्ट करेगी. आप किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन को हेज नहीं कर सकते. It is going to affect the price of your securities. It is going to affect the returns on your securities. You cannot diversify against it. It's called macro risk. Then there is interest rate risk. The change in interest rates are not in your hand. When the interest rate changes, the price of your security changes. So if you are aware, bond prices and interest rates have an inversely proportional relationship. और ये तो बहुत इंट्यूटिवली भी बैठता है. बॉन्ड्स प्राइस कैसे होते हैं? एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है जिसको हम यूज करते हैं बॉन्ड के कैश फ्लो को डिस्काउंट करने में. हम पुल बैक करते हैं सारे कैश फ्लो को एट अ पर्टिकुलर रेट. अगर वो रेट ज्यादा होगा तो द डिस्काउंटेड वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस. हम एक ज्यादा फोर्स से उसको डिस्काउंट बैक कर रहे हैं तो द बॉन्ड प्राइस इज गोइंग टू बी लेस. बट अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है, इंटरेस्ट रेट्स लो है, मतलब मैं कम इंटरेस्ट रेट से सारे कैश फ्लो को पीछे टान रही हूँ, पीछे खींच रही हूँ, my prices are going to be higher, which basically implies don't read too much into it. This is something we will deal with it in the next few learning modules. So it's okay if you do not have a very perfect understanding of this. It's fine. But essentially what I'm trying to say is bond price and interest rates have an inverse relationship. Higher interest rates, lower prices, lower interest rates, higher prices. इंटरेस्ट रेट रिस्क ऐसा है जो हमारे सिक्योरिटी में आता है, लेकिन हम उसको डाइवर्सिफाई या हेज नहीं कर सकते किसी तरीके से. इट विल अप्लाई ऑन एन ग्लोबल लेवल एंड इट विल अप्लाई टू ऑल द सिक्योरिटीज. सो इट इज अ मैक्रो रिस्क. Then again, when we talk about macro risk, we cannot forget market risk. ऐसा कोई इवेंट हो गया, ऐसा कोई चीज हो गई, कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, जैसे 2008 का ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, जैसा जो ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, या जैसा जो ईरान वॉर गया जिसकी वजह से पूरा मार्केट अफेक्ट हुआ. So there are going to be events essentially that is going to impact the entire globe, that is going to impact the entire market, that's going to impact the entire economy. You cannot predict them, you cannot diversify against them. It is going to have an overall impact. So these are a few examples of systematic risk that you cannot diversify against and are called macro risk. Macro level पे ये risk है. But then again, there are certain risks that you can diversify against, जो पूरे macro level पे नहीं बल्कि micro level पे, या तो micro level पे है. It is either issuer specific, which means
जिस पर्टिकुलर कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर इशूअर का बॉन्ड हम खरीद रहे हैं, it could be a risk specific to that issuer, or it could be a industry or sector specific risk. It could be a issuer specific risk, or it could be a industry or sector specific risk. Now the industry and sector is very similar to market risk, lekin instead of the whole market, we are only talking about a specific sector or the industry that company or that issuer belongs to. Okay. And issuer specific risk can either come from his day-to-day business, any changes in his day-to-day business. It could either come from his financial leverage, amount of debt he's taken, whether he's taken more debt, whether the returns have paid off for his debt, what is the cost of borrowing. So in terms of that, or it could come from default risk, which means the ability of that issuer to be able to pay his debt. तो इन चीजों की वजह से there can be, again repeating what all of you already know, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो हमने रिटर्न सोचा है, जो हमने रिटर्न सोचा है अपने एसेट के बारे में, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम जो रिटर्न हमको एक्चुअली मिल रहा है. अगर इशूअर डिफॉल्ट कर गया तो हमको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो नहीं मिलेगा. अगर सेक्टर में कुछ हो गया, दैट कंपनी डज नॉट परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज ऑफ द सेक्टर, तो हमको अपना सोचा हुआ रिटर्न नहीं मिलेगा. सो बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर आर रिस्क फैक्टर्स because of which expected return and actual return can vary. That risk factor can be macro, affecting on a macro level, diversify nahi kar sakte, called systematic risk, or can be on a micro level, can be issuer specific or industry specific. These are unsystematic risk and can be diversified, also called diversifiable risk. Can be diversified. We saw in the derivative, in the foreign currency exposure example, कि अगर foreign currency है तो मैं वो इस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ. अगर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो वो स्मॉल कैप की वजह से जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आई कैन गेट सम लार्ज कैप स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो, ताकि मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न पूरा का पूरा स्मॉल कैप पे डिपेंडेंट ना हो. आई कैन डाइवर्सिफाई द रिस्क दैट इज अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल कैप बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स एज वेल. So certain risks are diversifiable. They are called unsystematic risk or micro risk, but certain are not diversifiable. अगर इन्फ्लेशन की वजह से मेरा रिटर्न में डिफरेंस आएगा, my asset is giving a 10% return, which is right. It's still giving me a 10% return. लेकिन I was expecting inflation to be 5%, but the inflation turned out to be 8%. So the real return that I got is much different from what I was expecting. इसकी वजह से जो रिस्क है ये मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती because I can't diversify against inflation. Is that clear? Is this point clear? I hope that was clear to all of you. Was that point clear? Okay, great. I see a thumbs up. Good. Just checking if we have covered all the topics from this LM. We spoke about the risk return trade-off, which was risk ज़्यादा होगा तो मैं रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगी. Say there is an instrument, there is a financial instrument that is giving me a very high return, लेकिन उसका रिस्क प्रोफाइल ज्यादा नहीं है.
the risk of that instrument is very less, but the return that I'm getting is very high from it. क्या होगा उस इंस्ट्रूमेंट का? It's going to attract more people to buy that. The demand for that instrument will go up, right? If there is an instrument that is giving me beautiful returns, but the risk associated is not much, it's going to attract a lot of investors. The demand is going to increase. The price will increase. The increase in price means reduction in returns. I hope intuitively that is okay. An increase in price means a fall of returns. जो चीज पहले मेरे को 80 में मिल रहा था and I know I could sell it at 100, so the profit was 20 upon 80, the return was 20 upon 80. अब उसका प्राइस बढ़ गया है, अब वही सेम चीज मेरे को 90 में मिल रहा है and I know I'll be able to sell it at 100 only. So now the price has increased, which means the return has fallen to 10 upon 90. 20 upon 86 fallen to 10 upon 90. तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न ज्यादा है, रिस्क नहीं है, प्राइस बढ़ेगा, रिटर्न घटेगा. तो इफ यू सी वी आर रीचिंग दैट इक्विलिब्रियम कि किसी का अगर रिस्क कम है तो उसका रिटर्न बहुत लंबे समय तक हाई रह ही नहीं सकता, वो नीचे आएगा. सिमिलरली इफ वी हैव एन एसेट दैट इज नॉट गिविंग अस इनफ रिटर्न्स but is a very risky asset, so ultimately the demand will reduce. People will want to sell it, people will not want to hold it क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा है और उसके लिए रिटर्न वो एसेट दे नहीं रहा, तो people will not want to hold it, will try to sell it, which means the prices will start to fall down, which means the returns are going to start to go up. So if you can see this equilibrium कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी का रिटर्न ज्यादा है तो उसका रिस्क कम हो, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी गिरेगा. सिमिलरली अगर किसी का रिस्क ज्यादा है तो वी नो द रिटर्न इज इवेंचुअली गोइंग टू इंक्रीज. दिस इज कॉल्ड द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. अ रिस्की एसेट विल जनरेट मोर रिटर्न. ये सेम कॉन्सेप्ट को हम इतने देर तक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के पिक्चर से कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट रिस्क प्रीमियम that is needed to compensate the additional risk and that is why higher return. और इसको जब हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो वी सी अ स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर वेयर वी टॉक अबाउट रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न को ज्यादा होना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अफेक्टिंग द प्राइसेस. नाउ देयर इज अ वेरी great example in our कोर. जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था अगर याद है ये एलएम कि आप एक इंडिविजुअल वेल्थ फंड मैनेजर हो और आपके पास 2 इंडिविजुअल आए हैं, आप उनको अपने आर्सेनल में से कैसा पोर्टफोलियो बना के देंगे? क्या सेम पोर्टफोलियो बना के दोगे, क्या अलग पोर्टफोलियो बना के दोगे, किसके पोर्टफोलियो में कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी, ये आपका डिसीजन है. ये डिसीजन समझने के लिए आपको हर सिक्योरिटी का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल पता होना चाहिए. रिटर्न में प्राइस रिटर्न, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न का प्रपोर्शन पता होना चाहिए. अगर ये सिक्योरिटी की समझ नहीं होगी तो आप किसी को सिक्योरिटी सजेस्ट कैसे कर पाओगे, राइट? Based on that, there is a case study given in the core. I'll read it out. It says that in an investment management, investors differing objectives inform asset allocation among various assets. So basically, we have 3 investors. In this case study, we have 3 investors. Okay. So we have investor A. Investor A is seeking aggressive capital growth, prioritizing
prioritizing long-term capital appreciation. Then we have investor B. Investor B is looking for a balanced approach seeking returns from both growth and income. ये जैसे जैसे मैं लिख रही हूं वैसे वैसे आपके मन में आ जाना चाहिए कि कौन से इन्वेस्टर को कितना सिक्योरिटी या कैसे सिक्योरिटी जाना चाहिए. जैसे जैसे मैं लिख रही हूं वैसे वैसे एक आप लोग के मन में ऑलरेडी फीलिंग आ जानी चाहिए कि कौन से इन्वेस्टर का कैसा पोर्टफोलियो बनेगा. And then we have investor C who desires a more steady income. Who desires a more steady income with some growth to hedge against inflation. तो जो सी बंदा है उसको स्टडी चाहिए, उसको बस कंटिन्यूसली अपना इन्फ्लेशन बीट करना है. दैट इज हिज पर्पस. नाउ द एसेट्स दैट वी हैव आर large capitalization equity. These are the assets we are holding in our arsenal. These are the tools we have in our arsenal. We have long-term government bond. And we have T-bills, which are short-term. Essentially, inflation cover करता है, inflation को reflect करता है. So, based on this, अगर मुझे तीनों इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बनाना पड़े. Okay, this is where I want all of you to respond. A, B, C. I have large cap equity. I have long-term government bond. And I have T-bills. Who do you think out of the three will have the highest proportion of equity? Whom do you think amongst the three of them, investor A, B, and C, will have the highest proportion of equity in their portfolio? A. Yes, I can show the question again. I can show you the definition of the requirement of each investor. Investor A needs aggressive capital growth. He wants to prioritize long-term capital appreciation. तो उसको प्राइस रिटर्न चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न से उसको ज्यादा मतलब नहीं है. अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं चाहिए. बी है बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, उसको दोनों ग्रोथ और इनकम जनरेशन चाहिए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न भी चाहिए, प्राइस रिटर्न भी चाहिए. सी है जो ज्यादा स्टेडी इनकम ढूंढ रहा है, ग्रोथ अगेंस्ट इन्फ्लेशन ढूंढ रहा है. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. लार्ज कैप इक्विटी का प्रोपोर्शन हाईएस्ट है हमारे ए के लिए, सो लेट्स से दिस इज 80. उसके बाद आई थिंक बी का होगा, क्योंकि उसको स्टेडी इनकम जनरेशन चाहिए, उसको दोनों चाहिए, ग्रोथ भी और इनकम भी. तो नेक्स्ट वी कैन प्लेस 60% फॉर बी एंड लेट्स से वी हैव 50% फॉर सी, क्योंकि स्टेडी इनकम तो इसको भी चाहिए, तो 50% वी कैन प्लेस ओवर हियर. नाउ आउट ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड से लेट्स से 10% लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड किया है, 10% टी बिल्स होल्ड किया है, क्योंकि एकदम हम उसको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एकदम इक्विटी में तो डाल ही नहीं सकते. वी नीड टू हैव सम सेफ्टी नेट फॉर हिम. सिंस बी इज लुकिंग फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच एंड अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इनकम, तो
let's say it's holding 35% of long term government bond, इससे मेरे को एक लंबे समय तक इनकम जनरेशन मिलेगा, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड का इतना हाई प्रपोर्शन इज बिकॉज लंबे समय तक इसको ग्रोथ एंड इनकम चाहिए. तो ग्रोथ आएगी लार्ज कैप इक्विटी से, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से लंबे समय तक इनकम जनरेशन होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, एंड से द रिमेनिंग 5 वी पुट इट इन T-bills. As we were discussing, A को अग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, इसके लिए हमने लार्ज कैप इक्विटी में ज्यादा रखा, गवर्नमेंट बॉन्ड और T-bills में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हम पूरा इक्विटी में नहीं डाल सकते, हमको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा, हमको थोड़ा सा क्वेश्चन रखना पड़ेगा. B को स्टेडी इनकम जनरेशन चाहिए, लेकिन उसको ग्रोथ और इनकम दोनों चाहिए, बिकॉज ऑफ विच वी हैव केप्ट 60% इन इक्विटी. लार्ज कैप इक्विटी है तो हमको पता है स्टेडी रिटर्न्स है, उतना रिस्क नहीं है जितना स्मॉल कैप में होता है, लेकिन उसको ग्रोथ और इनकम दोनों चाहिए. इसकी वजह से हमने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में 35% इन्वेस्ट किया है, विच मीन्स देयर इज गोइंग टू बी अ रेगुलर income generation, and we have kept 5% in T-bills. For C, it needed, let's see what C's requirement was. Just a second. Okay. C wanted a more steady income and some growth against inflation. And so for a more steady income, we have kept 50% in equity. प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्मॉल कैप इक्विटी होता तो हम प्रपोर्शन कुछ अलग रखते, क्योंकि रिस्क फैक्टर स्मॉल कैप इक्विटी में ज्यादा होता है, वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है. लेकिन लार्ज कैप, तो देयर इज सम सेंस ऑफ सेफ्टी ओवर हियर, देयर इज सम सेंस ऑफ स्टेडी ग्रोथ दैट वी कैन एक्सपेक्ट. ऑफ कोर्स दैट ग्रोथ विल बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिटर्न एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, बिकॉज ऑफ विच वी केप्ट 50% ओवर हियर. लेट्स कीप 20% over here and 30%, क्योंकि इन्फ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहिए. और एक्चुअली 30% in long term government bond and 20% in, again, this all, let's say this is 20 and this is 30. There is no one right answer to these questions, लेकिन इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट से हमको समझ आना चाहिए कि किसका प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, किसको ग्रोथ चाहिए, किसको ज्यादा रेगुलर इनकम चाहिए. And this understanding is what is going to help us build the portfolios in a right direction. Now, if suppose हमने दे दिया इनका individual proportion of each security in the portfolio, say every large cap has given us some return, long-term government bond का कुछ return है, T-bills का कुछ return है, तो I hope all of you are okay calculating the return for an individual investor. It will be the weight of that particular security, मतलब कितना percentage हम उस security में invest कर रहे हैं into the return of that security, right? So here I is from 1 to 3 क्योंकि 3 securities हैं, हर का weight उसके portfolio में into the return of that portfolio. Now, if I were given a distinction between price return and distribution return, तो मैं investor का I would have been able to calculate the price return of investor A. Again, summation of weight of each security in the portfolio into the price return of each security. And similarly, distribution return निकालना होता A का, तो weight of each security in the portfolio into the distribution return of each portfolio. When we are going to do a sum, it's going to be very clear, but otherwise it's a very straightforward concept. With that, we come to the end of learning module, but of course, we are going to take up questions before we complete this chapter.
तो आपको ये क्लास के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा लर्निंग मॉड्यूल 2 का, और एक सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे लर्निंग मॉड्यूल 1 के. इट हैज 30 क्वेश्चंस and you are going to get an end of chapter quiz, an end of chapter test actually, that you can take once you are sure that you're perfectly okay with the first learning module, you're clear with all the concepts. Okay, let us take us some questions. कोई बचे हुए अगर doubts हैं या कोई concept हमने miss किया है तो we cover them through these questions. Just wanted to highlight one more point, maybe. So if we have the arithmetic mean return for a security and we have the geometric mean return for the same security, can we determine the risk from the two returns? Yes. How are we going to determine the amount of risk? Maybe we can't quantify it, but how are we going to understand the amount of risk that security has? Can we understand the risk the security has? If yes, how? Okay, Prerna, you've given me an equation. I was just looking for the intuitive answer, which is अगर geometric mean बहुत ज़्यादा कम हुआ arithmetic mean से, तो variability ज़्यादा है. अगर variability ज़्यादा है तो risk ज़्यादा है. Right? It means कि returns steady नहीं है, returns बहुत ज़्यादा move करते हैं, तो returns steady नहीं है तो risk ज़्यादा है. So it's not, Aditya, it's not just through GM. It is actually through the difference between AM and GM. If the AM and GM are very close to each other, इसका मतलब returns में variability उतना ज़्यादा नहीं होगा, और अगर returns में variability ज़्यादा नहीं है तो risk भी कम है. तो generally, now tell me, bonds और equity में से variability ज़्यादा किसका होना चाहिए? Between bonds, we saw that in the graph also that was provided by the code. Correct. Equity will generally show more variability in return, क्योंकि उसका return price return dominated है, जो move ज़्यादा करती है based on various factors. Bond return is mainly through distribution returns, which is fixed in a certain way. And that is why the variability is less, which means AMR and GMR for a bond should be आजू बाजू में close enough, लेकिन equity का AMR और equity का GMR में थोड़ा difference हो सकता है. So I just thought I might have missed saying this point across. And question पूछ सकता है कि तीन सिक्योरिटी दे सकता है, दोनों के AMR और GMR दे सकता है, और पूछ सकता है कि इन तीनों में से रिस्की एसेट कौन सा है. सो वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि AMR और GMR के डिफरेंस से वी गेट टू नो द वेरिएबिलिटी. मोर द वेरिएबिलिटी, मोर द रिस्क. मोर द रिस्क, मोर रिटर्न वी डिमांड. आई होप आई डिडंट कंफ्यूज एनी ऑफ यू. Great. Let's move to our questions. Question 1. Based on historical data, and please, I want all of you to participate क्योंकि बहुत easy questions हैं. Based on historical data, which of the following assets has typically had lowest average annual returns over time? So US equity, US corporate bonds, US government bonds में से. Correct. All of you have said C. Absolutely correct. Let's move it to the side. Okay, that is correct. US equity should have the highest return, followed by US corporate bonds, followed by US government bond. और US government bond का जो return होगा
वो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट मतलब इन्फ्लेशन और रियल रिस्क फ्री रेट के बहुत आसपास ही रहेगा. It's not going to be very away from it. Okay, next question. Which type of return do investors most commonly receive when investing in debt instruments? Price distribution, fixed capital distribution. Option C isn't venture. Option C should be variable, not capital distribution. Yeah, this is variable capital distribution, not appreciation. Fixed capital distribution. So debt instruments, absolutely great, all of you. It is B, fixed capital distribution. Debt instruments generally have higher fixed capital distribution returns. Question 3. For international bond investments, foreign exchange rates determine the bond's coupon rate, have no impact on the bond returns, affect investors' home currency return. Good, all of you have said C. That is correct. बॉन्ड का कूपन रेट तो वो कंपनी ही डिसाइड करेगी. एक्सचेंज रेट से उसको कूपन रेट में कोई डिफरेंस नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द होम करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि जब हम एक्सचेंज करके रिटर्न लेंगे तो करेंसी एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट करेगा. The correct answer is C, affect the investor's home currency return. Next question. Does the variability of annual returns relate to investment risk? Does the variability of annual returns relate to investment risk? A, there is no relationship. B, yes, greater variability indicates lower risk. C, greater variability indicates higher risk. C is the correct answer. This is what we were just discussing. ज़्यादा variability, ज़्यादा risk, ज़्यादा return. Question 5. Which factor is considered a macro risk affecting all investments? Before that, give me two other names for macro risk. Give me two other names for macro risk, please. There were two things I mentioned about macro risk. Very good. It's systematic and it's non-diversifiable. Inflation was a type of macro risk, not the name of a macro risk. Macro risk को हम systematic या non-diversifiable भी बोल सकते हैं क्योंकि वो diversify नहीं किया जाता. Which factor is considered? The answer is A, inflation. Industry sector trends और company sector specific performance हो गया आपका micro risk, जिसमें कंपनी स्पेसिफिक इज द बिजनेस रिस्क. वो बिजनेस अपने आप में कैसा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी पे कैसा परफॉर्म कर रही है, इट्स द बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ परफॉर्मेंस एनालिस्ट इज लुकिंग एट टू इन्वेस्टमेंट्स that happen to have the same historical return, but one has a wider range of annual asset return. I hope all of you are okay with range. क्या होता है? Range is highest return minus lowest return. तो पूरे history के लिए what was the highest annual return minus what was the lowest annual return. That is the range, right? High minus low. तो दो investments है, उसका सेम हिस्टोरिकल रिटर्न है लेकिन एक का रेंज ज्यादा है, which means the difference between the highest and the lowest is greater. What is the wider range of asset return most likely to indicate? Lower risk, higher risk, consistent return. Very good, all of you. It is B, higher risk. Again, we are talking about variability over here. 7. Based on the historical record, which of the following asset types
typically earn the highest average returns over time? Corporate bonds, large cap equity, government bond. B, government bond. See, I told you all, this is a chapter that it's not going to be one way. आप लोग को भी उतना ही पता होगा क्योंकि बहुत intuitive chapter है. Question 8. If the risk-free rate is 2.5% and the expected market return is 7.5%, the market risk premium is closest to assume simple annual returns. Simple annual returns का कहने का मतलब है हम simply subtract कर सकते हैं. अगर फिशर इक्वेशन होता तो हमको फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर करना होता. ठीक है, तो रिस्क फ्री रेट 2.5 है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 7.5 है. इसका मतलब जस्ट बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, द एडिशनल रिटर्न वी डिमांड इज 7.5. मतलब additional return that we demand is 5%. So the correct answer is B. Prerna, why do you think it's 10%? हम बोल रहे हैं कि मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है, which means additional return, जो excess return है that I want because I am investing in the market is 7.5%. जो total return that I want, the total return that I want is 7.5. इसमें से risk free component is 2.5, which means just because I am investing in the market, so I am demanding 5% extra, which means market risk premium, the risk that I'm taking by investing in the market, that is 5%. Prerna, is that clear? You had said it's C. Okay. So expected market return minus the risk-free rate is the market risk premium. The risk premium I'm demanding because of investing in the market. Okay, they have calculated it using the Fisher equation. We can also calculate it using the normal subtraction. That is absolutely fine. In the context of total investment risk, macro risk represents non-systematic risk, are independent from total investment risk, significantly influence overall investment performance. In the context of Devesh, please read the question again. जरूरी नहीं है ना कि मैक्रो रिस्क सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे. In fact, micro risk is supposed to have a greater influence on the investment performance. मेरा business कैसा perform कर रहा है, that is going to have a bigger impact on the company's return. The correct answer over here is A. I see a lot of variable answers, C, B, and A. The correct answer is A. Macro risk represents. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. It was C is correct. I'm so sorry. In my head, I was reading it as systematic. I'm so sorry. Really apologies for that confusion. In my head, I was reading it as systematic, even though it was non-systematic. I'm so sorry. The correct answer is C. I'm so sorry. Yeah, even I think I confused it. क्योंकि मैक्रो रिस्क ओवरऑल को इम्पैक्ट करता है, मैक्रो रिस्क ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर फैक्टर. तो अगर कोई सिस्टमैटिक रिस्क हुआ या कोई मैक्रो रिस्क फैक्टर आया तो वो मेरे सारे परफॉर्मेंसेस को इक्वली इम्पैक्ट करेगा, which means ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को वो इम्पैक्ट करेगा. A is non-systematic risk, which is incorrect. It is systematic risk. I really am sorry for that confusion over there. B are independent from total investment risk. So it is not independent. It affects my total investment risk.
C is the correct answer. It significantly influences overall investment performance. By this, the question means अगर एक पोर्टफोलियो है जिसमें 3 सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, 3 कंपनी के शेयर्स मैंने होल्ड कर रखे हैं, अगर कोई भी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हुआ तो किसी एक शेयर को अफेक्ट करेगा, पर हो सकता है बाकी दोनों को ना करे. बट if there is a macro risk, it is going to affect all the 3 of them, which means it is going to impact the overall investment performance. आदित्य, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब मैक्रो रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, जैसे इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट या मार्केट रिस्क, और नॉन सिस्टमैटिक आर द माइक्रो रिस्क जिनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो इशूअर स्पेसिफिक या सेक्टर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है. इट्स जस्ट अ नेम दैट वी यूज. दिस इज सिस्टमैटिक एंड दैट इज नॉन सिस्टमैटिक. मैक्रो इज सिस्टमैटिक. Please, everybody, if you could just confirm if this is okay. Sorry for the confusion again, but hope the explanation is okay now. The answer is C. Micro risk मेरा business specific या issuer specific affect करेगा, लेकिन macro risk overall investment performance को affect करेगा. Was it? I think मैंने specifically देवेश को point out किया था, saying it was wrong. Really apologies for that. Okay. Question 10. A wider range of annual returns for an asset class is typically associated with higher risk and higher returns. The correct answer is C. Higher risk and higher return. C is the correct answer. Let us take a portfolio question and the rest we can share as homework. Okay, how does the risk-return trade-off principle affect asset allocation among investors with different objectives? It encourages all investors to prioritize high-risk assets for maximum returns. It does not encourage anybody. B, it leads investors to allocate assets based on their risk tolerance and return objectives. C, it suggests that low-risk assets offer the highest potential return. The correct answer is B. Okay, those were all the questions. I think one portfolio question we've already discussed. If you want to take a look, I'll just share the PDF. If anybody wants to take a look, okay, so in the core reading towards the end, yeah. Okay, this is the case study. This is given towards the end of the chapter. It is the case study we were doing where we spoke about portfolio allocation. So they have given the asset class return for different investors. Then they have solved for the asset allocation for all the 3 investors. And based on the asset allocation, they have calculated the return for the 3 investors. So we have more such examples for homework, but in case you want to have a look at what we did, it is the last case study of
the chapter. Now, before we end this learning module, I just want to show you all the 30 questions that we have. Definitely, Harsh. I will share it with the SACI team. They will share it with you all. Okay. So this is the question set that we have created for the first learning module. It has 30 questions from both the LOSs. When you do these questions, you will realize that the questions are in a slightly increasing difficulty order. Like the first 10 are slightly easy, the next 10 are in between, and the last 10 are the really expert level questions. They will test all the conceptual portions of the chapter. So once you guys have read your material, in case you want to, if you don't want to, you can just do the questions that have been provided, go through our notes that we share with you, and then do the questions and see if all the concepts are okay. I encourage to do a revision after the class, before the next class. Make sure you are comfortable with the portion we have already done. So अगर आप regular पढ़ाई करते रहोगे, yes it does, Prajal, it does include solutions at the end as well. और अगर आपको, और एक बहुत कॉमन चीज है, अगर कोई क्वेश्चन या किसी का सोल्यूशन एकदम ही समझ नहीं आ रहा है, तो even Sanjay sir and all of us, we encourage you to use Claude or ChatGPT to understand that portion, to understand that solution. And generally they give a well explanation. अगर आपको लगे ये explanation नहीं समझ आ रहा है जो solution में दिया हुआ है, थोड़ा आपको और समझना है, we encourage you to use Claude or ChatGPT for that matter. But I would just request all of you that before the next class, please make sure that you have revised the portion before. रेगुलर अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो कोई भी एक पोर्शन एक्यूमुलेट नहीं होगा, एंड you will just be prepared for completing our portion. We have completed LM2. It was one of the simpler learning modules. It was just an extension of what we've already done in learning module 1. We are going to take upon learning module 3 in our next class. Again, a very simpler one. It has benchmarking returns and it has index returns. कि index कैसे create कर सकते हैं. This was a portion जो 2027 syllabus के पहले equity का हिस्सा था. Equity में हम पढ़ते थे कि index कैसे create कर सकते हैं. They have moved it now to quants. But again, it's going to be a very easy breezy, intuitive chapter. I have also created, if anybody is interested, I have also created a small exercise related to the third chapter, where I have created an Excel simulator. It makes you the fund manager, and there are some constituents, there are some selections of companies that you can make, and you can select your weightage accordingly. There are going to be events that is going to impact your returns, and you can change the weights accordingly, so that at the end you need to beat the benchmark. I am going to share it once we do that chapter. If any of you want to have that real life example touch, it's an Excel simulator that we have created. You can please do it as an assignment if you want to, if you just want to see how things work. We will share it after the benchmarking class. It's just going to be a nice practical example of things. Okay, so that was it. Please practice. Please make sure you're thorough with the portions we have already done and prepared before your next class. Okay, bye-bye everybody. Hope you had a good class.